In an NPN transistor, the collector current is 24 milliampere. If 80% of the electrons reach collector, the base current in milliampere will be either this, or this. It is a NPN transistor. The collector current is 24 milliampere. For collector current, we have the equation IE ammeter is equal to IC plus IB base. Now, 80% of electrons reach collector. Electrons make the current. If 80% electrons are going through collector, that means 80% of the current is going through collector. So, if 80% is going through collector, then 100% which is coming from ammeter, according to this equation, the total current is IE 100%, IC 80%. So we can find out IB, and IB will be of course plus IB. Therefore, IB is 20%. Okay, all are in percentage. Now, the base current in milliampere. What is given to us? That 24 milliampere is collector current. In our equation, 80% is collector current. So if 80% is 24 milliampere, then this 20%, then 20% is equal to 24 multiplied by 20 divided by 80. 100 cancelled. And this comes to 4 and 4 6 are 24. 6 milliampere. And what is this 20%? 20% is the IB. IB is 20%, and here 20% is equal to 6 milliampere. It is so simple that 80% is equal to 24 milliampere. Therefore, balance 20% is equal to 6 milliampere. A Zener diode has a breakdown voltage of 5 volt with maximum power dissipation of 240 milliwatt. The maximum current the diode can handle will be this. So we have to find out suitable current. What is given to us? This power. Power is equal to 240 milliwatt. Another thing given to us, Zener diode has a breakdown voltage 5 voltage. So volt or potential difference is equal to 5 volt. Now, this is the voltage on which Zener operates. So Zener is always having across it its Zener potential, and that is 5 volt. That means the current going through the Zener diode is 5 volt. Now, if the voltage is 5 volt and power is this, we have the formula for power. Power is equal to, we have to find out current. So we would like to have a formula which is voltage into current. This formula we will use, and the power here is 240 milliwatt. Volt is 5 volt and current we can find out. Now divide it with this 5 volt and current will come to, I will be equal to 240 milliwatt divided by 5 volt, and this is equal to 240 divided by 5. Power is this 240 divided by 5. This is equal to 48 milli, and watt upon volt is equal to ampere. So 48 milliampere. This is the right option, 48 milliampere. An unregulated DC input voltage V1
is applied to a Zener diode having breakdown voltage Vz, then the breakdown condition for the diode to work as voltage regulator is. वोल्टेज रेगुलेटर में जब जीनर काम करता है तो उसका सर्किट देखिए, इट वाज लाइक दिस. रिवर्स बायस में हम इसको लगाते हैं. यहां पर जो हम वोल्टेज देंगे ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट, और यहां से जो निकल कर आएगी ये, दिस इज अर्थ, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है जिसके बीच में हम लोड लगाते हैं. तो इनपुट वोल्टेज इतनी होनी चाहिए कि उसमें से जीनर वोल्टेज कट जाए, तब ये जीनर इसके बराबर काम करता है. अगर इनपुट वोल्टेज जीनर से कम हो गई तो जीनर उसमें से क्या काटेगा और वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा. फिर से, अगर जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है तो इनपुट वोल्टेज हमेशा 5 से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यहां से करंट बाईपास होके शॉर्ट हो जाएगा और 5 वोल्ट यहां चला जाएगा. ये उसी तरह से है कि यदि हमको किसी पानी की टंकी में, यहां पर एक पानी की टंकी है, इसमें हमको 5 मीटर हाइट रखनी है पानी की, तो हमने यहां 5 मीटर पर छेद कर दिया. पर इसके साथ जो हमने टैंक लगाया है, इस टैंक पर हमेशा 5 से ज्यादा पानी होना चाहिए. अगर 5 से ज्यादा पानी होगा तो इसमें आएगा, यहां से ऐसा लीक होगा और इसमें कितना मेंटेन होगा, 5 मीटर. इसमें 5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए. अगर इसमें ही 4 मीटर है तो इसमें 5 मीटर नहीं हो सकता. इसलिए ये सप्लाई वोल्टेज है. सप्लाई वोल्टेज हमेशा जीनर वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जीनर उसमें से अपनी वोल्टेज ले ले, जीनर वोल्टेज, और बाकी को शॉर्ट कर दे. तो इसमें V1 Vz के बराबर भी नहीं होना चाहिए, V1 Vz से छोटा भी नहीं होना चाहिए, V1 Vz से बड़ा होना चाहिए. So this is the right option, C. In a Zener regulator, if source voltage is 30 volt, series resistance is 1.5 kilo ohm, load resistance is 2 kilo ohm, and Zener voltage is 10 volt, then the Zener current will be how much? ओके, थोड़ा सर्किट के बारे में सोचिए. ये हमने वोल्टेज सप्लाई की, यहां पर एक जीनर डायोड लगाया, रिवर्स बायस में, और ये एक रेसिस्टेंस दिया. सर्किट याद करिए, यहां से हम आउटपुट लेते हैं ताकि इसकी जो वोल्टेज है, जीनर वोल्टेज, वो हमको यहां पर मिल सके, और यहां पर हम लोड लगाते हैं. सो दिस इज सर्किट फॉर द जीनर डायोड. अब इसमें क्या क्या फिगर हमको दिए हैं. द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट, दिस इज 30 वोल्ट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 30 वोल्ट. सीरीज रेसिस्टेंस इज 1.5 किलो ओम. जीनर के साथ सीरीज में ये लगा है तो इसका नाम है सीरीज रेसिस्टेंस, और दिस इज हैविंग रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 किलो ओम. लोड रेसिस्टेंस 2 किलो ओम, इससे ये लोड ऑपरेट होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 किलो ओम. किलो मीन्स 10 to the power 3. Vz is 10 volt. The voltage across this is regulated fixed voltage, and that voltage is 10 volt. Voltage of Zener is 10 volt. Okay, these are the figures given. Then they want to know what is the Zener current. Zener current means current passing through it. Why the current should pass through it? Because this voltage is higher than 10 volt. Now we have to find current here. Let us see the circuit. यहां से this current will pass up to this. This is one branch, and then here is junction. At this junction, there will be excess current after breakdown voltage that will pass through it, and some current will pass through it.
We know if this is 10 volt Zener, then the voltage across this is also 10 volt. 10 volt. If this is 10 volt, then we can always find out current through it. What will be the current here? I is equal to voltage divided by resistance. Resistance is 2000 ohm. 2000, 2 kilo means 2000 ohm. So this comes to be 1 upon 200. And if we make it in milliamperes, then we can multiply it with 1000. So this is 1000 upon 200, that is 5 milliampere. Right? So you understand this? Voltage upon ohm is ampere. When we multiply with 1000, it becomes milliampere. So this is 5 milliampere, which is coming here. So we note it down, 5 milliampere in this. Now come here. This is 5 milliampere. We have to find this current. Let us call this IZ. Now this 5 milliampere in this direction, IZ in this direction, and these two currents are supplied by this. How much is current here? Can we find out? Answer is yes, we can find out. How? We know the formula, I is equal to V upon R. How much is V here? We know, because this is fixed. Breakdown voltage 10. If this is 10 voltage and the applied voltage is 30, out of which 10 is sustaining here by Zener. It does not allow it to become less than 10. Then what is the voltage between these 2 points? Answer, 20 volt. It is 30, 10 is here, 20 is here. Now we know this potential difference is 20. We know this resistance is 1.5. So we can find out how much is the current flowing here. 20 upon 1.5. 20 upon 1.5. This is the 1.5 kilo. When we say kilo, it is 10 to the power 3. And this is 20 volt. So we can make it, 20 volt. Okay. So this is 1.5. Now if this will come in ampere, we want to convert it to milliampere. For milliampere conversion, we multiply it with 1000, and now it comes to 20 divided by 1.5. How much this will be? Okay, 5 4s are 5 3s are. So this is 4 upon 40 upon 3. 4 upon 3. So you can do it 4 into 10 upon 3. This is 40 upon 3 milliampere. Right? Again, V is equal to 20 volt. R is equal to 1.5 into 10 to the power 3. So our answer is 20 upon 1.5. 20 upon 1.5 is equal to 40 upon 3 milliampere. So the current here is 40 upon 3 milliampere. Now 40 upon 3 is coming here, and here going is 5 milliampere. Rest is IZ, which is coming here. So how much is IZ is equal to 40 upon 3 minus 5 upon 1 milliampere. And this answer comes to, this is 15. 40 minus 15 is 25 upon 3. This is 8.33 milliampere. So this answer, 8.33 milliampere, is the right answer. In a common emitter amplifier having a voltage gain G, the transistor used has transconductance 0.03 mho and current gain 25. If the above transistor is replaced by another one with transconductance 0.02 mho and current gain 20,
the voltage gain will be how much? बहुत सारी टर्म्स इसमें आ रही हैं. So let us see voltage gain G. Voltage gain, that is okay, voltage gain. वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वोल्टेज गेन इज अल्फा डीसी, दैट इज करंट, अल्फा एसी, दैट इज करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस रेशियो आर आउटपुट डिवाइडेड बाय आर इनपुट. दिस इज वोल्टेज गेन. करंट गेन multiplied by resistance ratio. Okay. Now, this is equal to G. This is given. Let's make it number 1. Now, the transistor has transconductance 0.03 ohm. What is this transconductance? Transconductance. Conductance is opposite of resistance. Resistance is V upon I. So conductance is I upon V. So transconductance is I upon V. Which I and which V? The answer is I output divided by V input. That is transfer of conductance. So in transconductance, there is a transfer and IC is the output, VI is the input. So I upon V gives the transconductance. IC, V input. Now, this transconductance is equal to 0.03. 0.03 mho. Ohm ka ulta mho. Okay. Now, IC upon VI. Okay. The current gain is 25. This is the current gain, alpha. So, alpha current gain, which is equal to IC upon I base. This is equal to 25. This is also given to us. And now we have to find out when this transistor is replaced by another one. उसका भी ट्रांसकंडक्टेंस दिया है विच इज डिफरेंट. करंट गेन वो भी दिया है, वो भी डिफरेंट. तो हमको वोल्टेज गेन निकालना है उसका, यानी ये फॉर्मूला हमको दूसरे का निकालना है. अब दूसरा ट्रांजिस्टर जब हम लेते हैं तो उसका वोल्टेज गेन निकालने के लिए वोल्टेज गेन हमको कैसे मिलेगा? This is equal to current gain IC upon I base multiplied by resistance gain. Resistance output divided by resistance input. ये हमारी रिक्वायरमेंट है. अब इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं? तो आंसर है जो एक चीज नहीं चेंज हुई है दैट इज RC. ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया है. रेसिस्टेंस जो आउटपुट में लगाते हैं, जो लोड में लगाते हैं, वो रेसिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया. ओके. तो IC अपॉन IB और RI ये वैल्यूज हमारी चेंज हो गई हैं. IC अपॉन IB हमको दिया है करंट गेन 20. दिस इज 20. दिस इज फॉर सेकेंड ट्रांजिस्टर. IC अपॉन IB 20 ये हमको दिया है. ट्रांसकंडक्टेंस 0.02. इसका ट्रांसकंडक्टेंस फिर से सेकंड के लिए भी हमको क्या दिया है? ट्रांसकंडक्टेंस इज IC अपॉन VI. दिस इज इक्वल टू ट्रांसकंडक्टेंस 0.02. 0.02. अब यहां पर हम किसके लिए अटक रहे हैं? IC अपॉन IB इज नोन टू अस. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट RC अपॉन RI. ये कैसे मिलेगा? तो RC अपॉन RI देखिए,
ये व्हाट इज दिस 20 इज करंट गेन IC अपॉन IB। अब तरीका देखिए, ये है IC अपॉन VI इज इक्वल टू दिस। ये जो VI है दिस कैन बी रिटन एज IC अपॉन V इज इक्वल टू I into base multiplied by resistance of the baseline. Resistance input multiplied by current input gives the voltage input, and this is equal to 0.03. If this is equal to 0.03, then we can always find out what is value of RB. RB को इधर ले जाइए, 0.03 को इधर ले आइए, तो RB हमें कितना मिला? RB is equal to IC upon IB और 0.03 नीचे आ गया 0.03। दिस इज RB। क्यों चाहिए हमको RB? ये RB इज व्हाट? R इनपुट। ये है R इनपुट। अब देखिए यहां पर वोल्टेज गेन अल्फा AC, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? फर्स्ट ट्रांजिस्टर। फर्स्ट ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन जो G के बराबर है, G के बराबर है, ये है अल्फा AC। अल्फा AC क्या होता है? IC अपॉन IB बेस। अल्फा AC इंटू RC को वैसा ही लिखा अपॉन RI। ये हमने RI निकाल लिया है। R बेस का मतलब क्या होता है? RI, और RI की वैल्यू इतनी आई। तो यहां पर जो ये RI आना है, इस RI को हमने यहां पर लिख दिया क्या? ये RI की वैल्यू IC अपॉन IB इंटू 0.03। ओके, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बना? IC अपॉन IB इंटू, ये ऊपर चला गया तो IB इंटू 0.03 अपॉन IC। दिस इज इक्वल टू G। अब इसमें देखिए, हाँ ये RC IC अपॉन IB ऊपर चला गया तो IC IB RC 0.03 भी ऊपर चला गया 0.03, नीचे IB और IC, और अब आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसल हो गए। तो RC किसके बराबर हुआ? देयरफॉर RC इज इक्वल टू G अपॉन 0.03। ये हमने RC की वैल्यू निकाली किससे? फर्स्ट ट्रांजिस्टर वाले इक्वेशन से। और फिर हम लौटते हैं सेकंड ट्रांजिस्टर, जहां हम किसके लिए अटके हुए थे? RC के लिए। ये RC की वैल्यू हम यहां पुट करें नहीं, तो वोल्टेज गेन देखिए, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू दिस। इसमें से इसकी वैल्यू हमको ये दी गई है, गिवन, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया। सो ये वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, तो ये वोल्टेज गेन IC अपॉन IB कितना रखना है? 20 इंटू RC G अपॉन 0.03 डिवाइडेड बाय RI हमको यहां से निकालना पड़ेगा। निकाल के देखिए, ये IC अपॉन VI इज इक्वल टू 0.02, और ये किसके बराबर होता है? थोड़ा जगह कम है तो ध्यान से देखिए, IC अपॉन VI क्या होता है? IB मल्टीप्लाइड बाय RI, रेसिस्टेंस करंट। दिस इज VI, दिस इज इक्वल टू 0.02। तो RI किसके बराबर हुआ? RI इज इक्वल टू IB अपॉन, यहां से
आर आई, यहां से हमने आर आई निकाला, आई सी अपॉन आई बी इंटू 0.02. आर आई इज इक्वल टू यहां लेते हैं हियर आर आई इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी इंटू 0.02. ये आर आई की वैल्यू आई. अब फिर से यहां आ जाइए. वोल्टेज गेन कौन सा? सेकेंड ट्रांजिस्टर का है. वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी इंटू आर सी अपॉन आर आई इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी आर आई. इसको मैं इस तरह से रखता हूं, आई सी अपॉन आई बी इंटू आर सी. आर सी की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, एंड दिस इज जी अपॉन 0.03 डिवाइडेड बाय आर आई. आर आई की वैल्यू हम यहां से लेके आए. आर आई इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी इंटू 0.02. अब इसको ऊपर ले जाइए, ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया आई सी अपॉन आई बी मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर चला गया, आई बी अपॉन ये वाला आई सी, ये 0.02 ऊपर चला गया, 0.02, ये 0.03 नीचे आ गया, 0.03, और ये जी न्यूमरेटर में. This is equal to IB is cancelled, IC is cancelled, so this is 2 upon 3. 2 upon 3G. ये आया voltage gain in the second transistor. So this is how we get 2 upon 3 is the right answer. Here is the right answer, 2 upon 3. एक बार फिर से इसको देख लीजिए. वोल्टेज गेन हमको दिया हुआ है, वोल्टेज गेन जी, ये गिवन क्वांटिटी है. तो वोल्टेज गेन का हमने फॉर्मूला लिखा, अल्फा ए सी इंटू आर सी अपॉन आर आई इज इक्वल टू जी, और अल्फा ए सी किसके बराबर होता है? आई सी अपॉन आई बी. ओके. अब दूसरा हमको दिया ट्रांस कंडक्टेंस आई सी अपॉन वी आई इज इक्वल टू दिस, और इस वी को हम लिख सकते हैं आई बेस इंटू रेसिस्टेंस ऑफ बेस. रेसिस्टेंस ऑफ बेस ही क्या होता है? रेसिस्टेंस इनपुट. दिस इज इक्वल टू 0.03 ट्रांस कंडक्टेंस. अगर ऐसा दिया है तो हम आर आई को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, और ये हमने आर आई की वैल्यू निकाल ली. कितनी? आई सी अपॉन आई बी इंटू 0.03. ये जो आर आई की वैल्यू है ये हमको यहां रखने के काम आएगी. तो फिर से हमको आई सी अपॉन आई बी यानी अल्फा की वैल्यू गिवन है. गिवन कितनी? 25. अब इस वोल्टेज गेन में हमने वैल्यू पुट करनी शुरू की. वोल्टेज गेन कितना है? जी. तो जी किसके बराबर हुआ? जी इज इक्वल टू वोल्टेज गेन आई सी अपॉन आई बी अपॉन आई सी, ये तो कैंसल हो गए, और ये बचा 0.03. ये जो 0.03 है ये इंटू आर सी, इससे हमको आर सी की वैल्यू मिली, आर सी इज इक्वल टू जी अपॉन 0.03. तो यहां पर हमने इसको सेव कर लिया. अब दूसरे ट्रांजिस्टर में आते हैं. दूसरे ट्रांजिस्टर में हमको वोल्टेज गेन निकालना है, तो उसके लिए हमको आई सी अपॉन आई बी चाहिए और आर सी अपॉन आर आई चाहिए. तो आई सी अपॉन आई बी हमको गिवन है कि 20 है, दैट इज करंट गेन. अब इसमें हमको ट्रांस कंडक्टेंस दिया है 0.02. ट्रांस कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला लिखा,
V को किस में कन्वर्ट कर दिया, I इंटू आर में, इससे हमने RI की वैल्यू निकाली। तो ये जो RI की वैल्यू आई, दिस RI इज इक्वल टू IC अपॉन IB इंटू 0.02। अब इस सेकेंड ट्रांजिस्टर का फिर से वोल्टेज गेन का फॉर्मूला लिखा, IC अपॉन IB इंटू RC अपॉन RI। तो RI को हम अब क्या लिख रहे हैं, RI को हम लिखते हैं IC अपॉन IB इंटू 0.02। IC इसको सिंप्लीफाई किया, ऊपर नीचे करके रीअरेंज कर लिया, ये नीचे आ गया, IC IC कैंसल, IB IB कैंसल, एंड वी गेट इट 2/3G. So this is how we get it. Voltage gain in second tranche. The input resistance of common emitter transistor amplifier is either this. And what are the conditions? The output resistance is 500 kilo ohm. The current gain alpha is equal to this, and power gain is this. So what are the quantities given to us? Power gain. What is formula of power gain? Power gain is equal to alpha AC square multiplied by resistance gain. That is resistance gain, Ri upon Rb. This is power gain. Okay. How much it is given to us? 6.0625 into 10 to the power 6. Output resistance is 500 kilo ohm. RC is given. 500 kilo ohm. 10 to the power 3 ohm. Okay. The current gain alpha is equal to 0.98. Current gain alpha. Alpha is equal to, what is the formula of alpha? IC upon IE. This is current gain alpha, and this is given to 0.98. 0.98. This is alpha DC. Okay. Now, if this is 0.98, then what will be alpha AC? Now we are going to solve it. How much will be alpha AC? That means, what is alpha AC? Alpha AC is IC divided by IB. This is IC divided by, what is IB? IE minus IC. So, if IC is 98, this is given 0.98. This is 0.98. So IC is equal to 0.98 IE. So this is 0.98 IE emitter divided by IE minus IC is equal to 0.98 IE. This is equal to IE, take the common out, cancel with this, and this will be 0.98 divided by, इनमें से IE कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचा, 1 minus 0.98. This is equal to 0.98 divided by 0. This is 0.02. 0.98 divided by 0.02 is equal to 49. This we get alpha AC, amplification AC. Okay. Now again, power gain is alpha AC square into RC upon RB. Do we have RC upon RB? If the output resistance is 500, okay, RC is known to us, but RB is not known to us, and that is what we are supposed to find out. देखिए, the input resistance of a common emitter amplifier, if this is
transistor amplifier is either this. We are supposed to find out R, B or I input. So we write it here again. Alpha square AC. This. How much this will be? 49 into 49 alpha square AC into RC. RC is given to us. RC is this. 6.0625 into 10 to the power 6. This is RC. This is power gain. This power gain. Okay. 49. Oh, something is wrong. No, I should write it again. Okay. 49 into RC. Output resistance is 500 kilo ohm. RC. So I will write here this RC 500 kilo ohm. This. Okay. Now, divided by RB. This we have to find out. R input is equal to power gain. And how much is power gain? This. 6.0625 into 10 to the power 6. Okay. Now, Ri we put here. So Ri is equal to, this will come here, 49 into 500 into 10 to the power 3 divided by 6.0625 into 10 to the power 6. अब इस 10 to the power 6 को 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5 ये कैंसल, तो यहां कितना बचा? ओनली 10 to the power 6 को 5 पावर कैंसल हो गई, 5 powers are cancelled, only 1 power is left here. So we get here 49 into 49 divided by 6.0625 multiplied by 10. और अब इसको हमने सॉल्व किया. After doing calculation, you will find it comes to 198.02. So we rounded it 198 ohm. And we get the answer here. This is the right answer. 198. Okay. So see it once again. We get the answer 198 in this way. The collector supply voltage is 6 volt. And the voltage drop across a resistor of 600 ohm in the collector circuit is 0.6 volt in a transistor connected in a common emitter mode. If the current gain is 20, what is the base current? This. याद करिए, ये बेस, एमीटर, कलेक्टर और कलेक्टर से कॉमन एमीटर के लिए हम ऐसे सर्किट बनाते हैं. NPN. Okay. Voltage drop across this 6 volt. Where is this 6 volt? Supply voltage. 6 volt. The voltage drop across a resistor of 600 ohm. 600 ohm. Voltage across this 600 ohm is 0.6 volt. 0.6 volt from here to here. The voltage drop across 600 ohm is 0.6 volt in a transistor connected in common emitter mode. If the current gain is 20, what is current gain? IC upon IB. This is IB. IC upon IB is current gain and it is given. How much it is given? 20. Okay.
नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, बेस करंट IB. तो हमारे सामने सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है. वी मस्ट नो व्हाट इज IC. वेयर इज IC? हियर इज IC. यहां से यहां तक IC ऐसे जा रही है. इस IC की वैल्यू हम यहां से पकड़ सकते. यहां से यहां तक वोल्टेज कितना है? V अपॉन R इज इक्वल टू I, और ये V कितना लेना है? 0.6 डिवाइडेड बाय R 600 ओम. 600 ओम. और इसको ये क्या आएगा एम्पियर में? इसको मिली एम्पियर बनाते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके. ओके, दिस इज V, दिस इज ओम, सो दिस इज एम्पियर. और अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 0.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 600, देन इट विल बी इन मिली एम्पियर. ये एम्पियर में और ये मिली एम्पियर में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मिली में बन गया. और अब ये कितना आ गया? दिस इज 0.6 इंटू 1000 is 600 upon 600. This is equal to 1 milliampere. What is this 1 milliampere? This is V upon R here. What is this IC? This is IC. So IC is this. Now come back to here. IC upon IB given is 20. Here we put it IC equal to 1 milliampere upon IB is equal to 20. So how much is IB is equal to? IB, that is current in base, is equal to 1 upon 20 milliampere, and 1 upon 20 milliampere is 0.05 milliampere. This is the right answer. See here, this is the right option. This is the right option. Carbon and silicon both have same lattice structure having 4 bonding electrons in each. However, C is insulator while silicon is intrinsic semiconductor. This is because 4 रीजन दिए हैं और हमको उसमें से एक रीजन चुनना है. In case of C, the valence band is not completely filled at absolute zero temperature. This is wrong because at absolute zero temperature, all the valence band is full and conduction band is totally empty. So this is wrong. In case of C, the conduction band is partly filled even at absolute zero temperature. This is again wrong because conduction band, there will be no electron in conduction band when the temperature is absolute zero. All electrons are in the valence band. So this is also wrong. Now there are 2 options left. 4 bonding electrons in the case of C lie in the second orbit, whereas in the case of silicon they lie in the third orbit. कार्बन का और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपको याद करना है. Carbon, this is 2 and these are 4 electrons. The number is 6. 6 plus 6 minus. Silicon is 2 and third orbit there are 4. 2, 8, 4. This is silicon. Both have got 4 in the last orbit. What is given to us in the question? C and Si both have same lattice structure having 4 bonding electrons in each. दोनों के पास bonding electron 4 हैं. पर इसके second orbit में और इसके third orbit में. The 4 bonding electrons in case of C lie in the second orbit, whereas in case of Si, they lie in the third orbit. The 4 bonding electrons in case of C lie in the third orbit, whereas in silicon they lie in the fourth orbit. This is wrong. ये इसका actual structure होता है.
तो जब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ C इन सेकेंड एंड 4 इन थर्ड। बट एक चीज हमको ध्यान में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों कि ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, और ये इंसुलेटर है, नो कंडक्शन। क्यों? इसलिए क्योंकि ये आप देख रहे हैं सेकेंड लेवल में है और सेकेंड लेवल में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और इसको हमको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज फॉर दिस। आपको ये याद है, ये एनर्जी गैप हमने बनाए थे। दिस इज वैलेंस and this is conduction. If this energy gap is around less than 3, then it is a semiconductor. If it is more than 3, then it is a insulator. So in case of carbon, it is more than 3. क्यों more than 3 है? Because it is only in the second, और ये प्लस के साथ इसका attraction बहुत ज्यादा है. So we need lot of energy to remove it. And energy to remove it called binding energy, and this binding energy reflect here in the energy gap. So this energy gap for this is very large. In simple words, it is very difficult to make it conduct. ये थर्ड ऑर्बिट है, इससे ये काफी ज्यादा दूर है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसलिए इसका एनर्जी गैप कम है। इतनी कम एनर्जी है कि इसको हम यहां से निकाल सकते हैं एनर्जी देके और फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, इसलिए इसको ये कंडक्शन करेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज सेमीकंडक्टर। सो आवर राइट ऑप्शन इज दिस। In the middle of the depletion layer, a reverse biased PN junction. Okay, reverse biased PN junction, the depletion layer. P and reverse bias में ये अच्छा चौड़ा हो जाता है, और N की तरफ कौन बनेंगे? प्लस, और P कैसा बन जाता है? नेगेटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुके हैं एंड देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। अब ये चारों में से किस पोजीशन को ये रिफ्लेक्ट करता है? यहां पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी सेट होता है। दीज आर एट हायर पोटेंशियल, दीज आर एट लोअर पोटेंशियल, एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज दिस। This is the lower potential, zero potential. This is at a higher potential, zero, high. This is gradient. This is potential barrier. This is gradient. Okay. Now we come here. Potential is not zero. Reverse bias PN junction. The potential is not zero. The electric field is zero. Potential is maximum. Potential is maximum. कहां पर? In the middle of the depletion layer. In the middle of the depletion layer. यहां पर. Potential is maximum. Answer is no. Potential is here maximum. Here minimum. So this is wrong. Electric field is zero. यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस एंड माइनस इट हैज सर्टेन वैल्यू. दिस इज नॉट जीरो बिकॉज देयर आर चार्ज डेंसिटी हियर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो बिकॉज दीज चार्जेस आर there is certain value of electric field, and electric field is zero is wrong. And the first, let me correct the question. This is question. The potential is zero here, and you find at the center, this is the potential which is not zero. So this question is, this answer is also wrong. Potential is zero is wrong
because this is a non-zero potential. Electric field is zero. This is wrong because there is a electric field always. Potential is maximum. This is also wrong because here is the maximum potential. Then electric field is maximum. Okay. Electric field is maximum. This answer is correct because here the electric field everywhere is same. So it has one value E, and this E is everywhere. The same value is maximum value. So electric field is maximum at this point. So this is the right option. Electric field is maximum. Assertion. In a common emitter transmitter amplifier, the input current is much less than output current. We know it is correct. Input current is always small current, base current. Output current is always a large current. So this assertion is right. Now, reason for this. It is given the common emitter transistor amplifier has a very high input impedance. Very high input impedance. No, this is wrong. We know that small current of input is due to small cell or small battery we use in the input. That is the reason the current is small. So this reason is wrong. It has no high impedance. High impedance belongs to output where RC is very large. And input current resistance is small, so its impedance is also small. And the low current is only due to small battery. So this reason that the common emitter transistor amplifier has a high input impedance, this is wrong. There is no high impedance here. Now, we come to the four choices what we can give. Number one, assertion true, reason true. One is true, one is false. So this is not correct. Assertion is true, reason is true. Okay. Again, this is wrong because both are not true. Third, assertion is true, reason is false. This is correct. Assertion is false. No, assertion is correct. So assertion is false. This is wrong. So you will find answer C is the correct answer. The input resistance of a common emitter transistor amplifier. If the output resistance is 500 kilo ohm, current gain alpha is equal to 0.98 and power gain is 6 points this is. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये इज किसके लिए है? The input resistance of common emitter transistor amplifier is, तो हमसे पूछा गया है इनपुट रेसिस्टेंस RI. दूसरा दिया क्या है हमको? द आउटपुट रेसिस्टेंस इज 500 किलो ओम. R output 500 into 10 to the power 3 ohm. Current gain alpha, this is equal to 0.98. And power gain, ये उसकी क्वांटिटी दी है. This is 6.0625 into 10 to the power 6. अब हमको रेसिस्टेंस, पावर और अल्फा, ये चार क्वांटिटीज का रिलेशन याद करना है. तो पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर गेन का फॉर्मूला होता है, उसको याद करिए. पावर गेन इज इक्वल टू बीटा AC square multiplied by resistance output divided by resistance input. Now this is the quantity जिस पर आपको ध्यान देना है. ये क्वांटिटी क्या है? This is current gain का स्क्वायर. तो करंट गेन हमको यहां दिया है और यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि ये वाला जो करंट गेन है वो ये वाला करंट गेन नहीं है.
करंट गेन दो तरह के होते हैं। ये जो अल्फा दिया है ये है अल्फा विच इज इक्वल टू करंट आउटपुट डिवाइडेड बाय करंट एमिटर, ये अल्फा होता है और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 0.98। और जबकि हमको यहां क्या चाहिए, यहां हमको चाहिए चेंजेस इन आईसी डिवाइडेड बाय चेंजेस इन बेस करंट बीटा। सो बीटा इज इक्वल टू चेंजेस इन आईसी डिवाइडेड बाय चेंजेस इन आईबी, ये हमें चाहिए। तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो एक और रिलेशन याद करिए, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये रिलेशन होता है। और इससे हमने क्या बनाया, आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। तो बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी, ये बीटा की वैल्यू होती है आई ई और आई सी के टर्म्स में। लेकिन हमको क्या दिया है, आई सी अपॉन आई ई 0.98 की वैल्यू दी है। ओके, तो हमको बीटा और अल्फा इनको आपस में स्टैब्लिश करना है। तो देखिए ये क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी अपॉन आई सी। इसको डिवाइड करिए तो ये आया 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई सी माइनस 1। आई ई अपॉन आई सी किसके बराबर है, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, दिस इज 1 अपॉन बीटा। अब इसको और आगे हमने बढ़ाया, सो इन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो उल्टा किया तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा ऊपर चला जाएगा अल्फा, और यहां पर 1 माइनस अल्फा नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये बीटा और अल्फा का रिलेशन। इस डेरिवेशन को हमको याद रहना चाहिए था, हमको यहां करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। एनीवे ये हमने कर लिया, बीटा इज इक्वल टू दिस। तो अब हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इज गिवन 0.98, 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98 that is 0.2. So 0.98 divided by 0.02 and this comes to 49. ये आ गई बीटा AC की वैल्यू। अब बीटा AC की वैल्यू पता लग गई है, अब हम पावर गेन को उसमें सेट कर सकते हैं। देखिए ये वाला इक्वेशन अब हम सेट करते हैं। पावर गेन इज 6.0625 into 10 to the power 6 is equal to beta square, that is 49 into 49. R output हमको दिया गया है, R output 500 किलो ओम, तो ये हमने लिख दिया 500 into 10 to the power 3, 500 किलो ओम। और अब इसके बाद डिवाइडेड बाय RI। अब इसमें आप देखिए एक ही अननोन है RI, तो RI इज इक्वल टू, यहां पर हमने लिया 49 500 into 10 to the power 3. This is to be divided by 6.0625 into 10 to the power 6, and इसको आप पूरा कैलकुलेट करिए। 10 to the power 3, 4, 5 इससे कैंसल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे and all this comes to 198 ohm. So Ri is 198 ohm and we check here, this is the right option. तो यहां पर क्लू क्या था, अल्फा को हमको अल्फा AC या बीटा
AC में कन्वर्ट करना है और पावर के फॉर्मूले में ये अल्फा नहीं आता, ये वाला आता है। दिस इज IC अपॉन IB, ये या डेल्टा IC डेल्टा IB। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। There is a common emitter amplifier. Voltage gain is given by G. The transistor has transconductance this much, current gain this much. Now, if above transistor is replaced by another one with a transconductance 0.02 and current gain 20, what will be the voltage gain? This in terms of G. Okay, so what is given to us and what we are supposed to find out? We are supposed to find out voltage gain. So the formula for voltage gain is current gain, that is RC upon RB multiplied by, voltage gain is current gain is IC upon IB multiplied by resistance ratio RC upon RB. This is voltage gain. Now here given to us is the voltage gain is G. So this quantity is equal to G. This is given to us. IC upon IB current gain, RC upon RB resistance ratio, and this gives the voltage gain, and this is given as G. Now, the transconductance is 0.03 mho. Transconductance is again IC upon V input. Output current divided by voltage input is the transconductance. और ये हमको दिया गया है 0.03। अब ट्रांसकंडक्टेंस में ये VI आया है, V इनपुट, और V इनपुट को हम चाहे तो R की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब किस में डील कर रहे हैं? R की टर्म्स में डील कर रहे हैं। रेसिस्टेंस आउटपुट, रेसिस्टेंस इनपुट, करंट। तो क्या हम इसको रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। इस तरह से ये होगा IC अपॉन वोल्टेज इज रेसिस्टेंस इनटू करंट, इनपुट IB multiplied by resistance base. This is equal to 0.03. Now, here you can see, the value of RB. Value of RB यहां से निकालते हैं, and this value we will put here. So, RB is equal to, RB इधर ले जाइए, 0.03 इधर ले जाइए. So this is IC upon IB multiplied by 0.03. This is RB. Now, this is our equation number 1. This is equation number 2. So, equation 1 will be IC अपॉन IB को वैसा ही लिखते हैं, IC अपॉन IB मल्टीप्लाइड बाय RC को वैसा ही लिखते हैं, RC डिवाइडेड बाय RB, और RB को क्या लिखना है? IC अपॉन IB. IC अपॉन IB को मैं ऊपर ले लेता हूं, IB, और IB के साथ मल्टीप्लाइड है 0.03. और अब देखिए कितना इजी हो गया, IC कैंसल, IB कैंसल. सो पर ये हो क्या रहा है? दिस इज इक्वल टू G. दिस इज इक्वल टू G. तो अब हमको ये मिला RC की वैल्यू. रेसिस्टेंस इन आउटपुट इज इक्वल टू G अपॉन 0.03. ये रेसिस्टेंस आउटपुट क्यों निकाला हमने? क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर चेंज करेंगे तो क्या चीज नहीं चेंज होगी? आंसर है रेसिस्टेंस आउटपुट चेंज नहीं होगा. ओके, तो इसलिए हमने रेसिस्टेंस आउटपुट निकाला, एंड दिस इज ऑल विद फर्स्ट
transistor. This is transistor 1. Now we come to transistor 2. In second transistor, replaced by another one with transconductance 0.02 ohm, current gain this, and we have to find voltage gain. Voltage gain का फॉर्मूला ये है. वोल्टेज गेन अगर निकालना है तो हम पहले लेते हैं ट्रांसकंडक्टेंस. कितना है? 0.02. देखिए ट्रांसकंडक्टेंस that is IC upon VI. This is given as 0.02. तो इसको अब हम लिख सकते हैं IC upon V इनपुट. V इनपुट क्या होता है? करंट बेस मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस बेस. दिस इज इक्वल टू, जो हमने इधर किया था वैसे ही यहां भी किया, पर इस समय ये कितना है? 0.02. और इससे अब हमने आरबी की वैल्यू निकाली. तो रेसिस्टेंस बेस सेकेंड ट्रांजिस्टर के सर्किट में रेसिस्टेंस बेस की वैल्यू कितनी मिली हमको? IC अपॉन IB मल्टीप्लाइड बाय, ये 0.02 नीचे चला गया, 0.02. ये आरबी की वैल्यू मिली. अब वोल्टेज गेन लेते हैं जो कि हमको निकालना है. वोल्टेज गेन तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू IC अपॉन IB इंटू RC अपॉन RB. अब इसमें हमने लिया IC अपॉन IB मल्टीप्लाइड बाय RC अपॉन RB. RB की वैल्यू ये रखेंगे, ये वैल्यू है IC अपॉन IB. अपॉन IB को इधर ले आए, अपॉन IB, और IB के साथ मल्टीप्लाइड है 0.02. अब यहां पर IC कैंसल्ड, IB कैंसल्ड, RC इंटू 0.02. लेकिन RC की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, G अपॉन 0.03. और ये चेंज नहीं होगा. जब हम ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं तो आउटपुट हमने वही रखा हुआ है RC, सिर्फ ट्रांजिस्टर चेंज किया है. तो इस रेसिस्टेंस के कारण अब वोल्टेज गेन कितना होगा? तो ये वोल्टेज गेन हुआ, RC की वैल्यू रखी G अपॉन 0.03 and this is to be multiplied by 0.02 and this is equal to 2 upon 3G. ये आ गया वोल्टेज गेन इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर. देखते हैं this and this 2 upon 3G. This is the right value.